अगर इंडिया पे अंग्रेज़ों का 200 साल का राज ना होता, then our history perhaps would have been very different. Now, you may have heard many stories about how British conquered India, and of course, the last battle which Indians lost, after which British had the complete control over India, was Battle of Plassey. You know, the seeds of Battle of Plassey were sowed when the then Mughal Emperor Farooq Siyar suffered from hernia. मुगल एम्परर फारूक सियार को हर्निया हुआ था, जिसका इलाज के वैद्य या हकीम नहीं कर पा रहे थे। एक अंग्रेज डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने उसका इलाज किया। हर्निया के दर्द से निजात पाके फारूक सियार ने खुश होके अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया, जिसका नाम था दस्तक, विच मीन्स ट्रेड परमिट। और यही दस्तक यानी ट्रेड परमिट बना बैटल ऑफ प्लासी की जंग का कारण। बहरहाल, अगर तब हिंदुस्तान में हर्निया का इलाज होता तो शायद हम अंग्रेज़ों के गुलाम ना हुए होते। Hence, what I want to say is that knowledge is the king, and this is the age of information. Hence, the information is the king. In this video, I am going to introduce to you a tool which will help you extract, key personal details of your subject, like his personal WhatsApp number or mobile number, email ID, etc. Now, let us straightway dive into the tool. So, guys, today I am going to introduce to you a tool which I have been using for quite a long time very successfully, and this tool has helped me a lot. This is a tool जिसकी हेल्प से आप वर्चुअली किसी की भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल सकते हैं। And I can tell you from my own experience, about 85 to 90% of the times I have been able to get the details, and about 90% of those details have been correct. Tool integrates with a lot of things, but I have been using it only with my LinkedIn profile. Okay, so guys, this is the LinkedIn profile which I have. This is my profile. So what you have to do is that you have to go to a site called Easy Leads. It's a beautiful tool. Now when you go to the Easy Leads, the first thing you have to do is that you have to install the Mr. E, जो उनकी एप्लीकेशन उसका नाम है Mr. E. Okay, I guess E is for entrepreneur, and then you have to just do it add to Chrome, so it will install the extension to Chrome. Now, so this is installed. The first thing you will do is, after you have installed the extension, is that you have to log in. I have already signed up, and hence I don't have to sign up. Otherwise, since if you are doing it for the first time, of course you will be doing it for the first time, then you have to then it will prompt you to sign up. Now, one thing more is that I always use it with my work email. In other video, I'll show you how you can create your work email that is a professional looking mail account. For example, I have my own legal-eagle.live, my own domain name, तो थोड़ा प्रोफेशनल भी लगता है अगर वैसा हो तो। और हर ईमेल के साथ जब भी आप अकाउंट बनाते हैं इसमें, तो यू गेट 5 क्रेडिट्स फॉर फ्री, यानी कि आप 5 लोगों की सर्च फ्री में कर सकते हैं। नो दैट बी द केस, आप अगर आपका खुद का डोमेन नेम है, देन यू कैन create as many email IDs as you want, and with each email ID you are going to get 5 credits. So I may be of much appreciation for this tool, but I haven't spent even a single penny so far. Now we log in. नो गाइस, आई एम लॉग्ड इन। सो ये मेरा ये जो एक्सटेंशन है जो इंस्टॉल की थी, जो साइड में विंडो में खुला हुआ है, मेरा ऑटो लॉगिन उसमें हो गया है। अब मैंने आई टोल्ड यू दैट आई हैव यूज्ड इट इन पास्ट, तो मैंने रहेजा डेवलपर्स की डिटेल्स इससे निकाली है। मैंने M3M बिल्डर्स जो है उनकी डिटेल्स भी इससे निकाली, उनकी मैनेजमेंट की। मैंने सुपरटेक के लिए यूज़ किया है। अदरवाइज मैं अपने पर्सनल कामों के लिए बहुत यूज़ करता हूँ इसको, और भी कॉर्पोरेट्स के निकालता रहता हूँ। सो लेट मी सी
let us try, हम रहेजा डेवलपर्स की डिटेल्स निकाल पाते हैं. So one thing which we all know is that one of the co-promoters is Nayan Reheja. So let me see whether his details are there or not. Okay guys, ये है promoter Reheja developers. So we click on this, and now what we'll do is that we will click on his LinkedIn profile. Now the moment you click on his LinkedIn profile, in this side window, this is side window जो अलग से खुली हुई है pop-up, it will reveal the details. Now two things. One is, I don't want to reveal his details unless you need it and you can do it by yourself. Secondly, I don't want to waste any of my credits. So if in case you will click on this view number, this will reveal his number. When you will click on view email, it will reveal his email ID. Okay. Now I'll take one more example. हम लेते हैं पंकज बंसल का जो M3 वाला है. आई गेस इसकी दो प्रोफाइल्स हैं, बट वील ट्राई एंड सी इफ इसकी इस प्रोफाइल से आता है क्या नहीं आता. अगेन द मोमेंट आई क्लिक ऑन हिज लिंक्डइन प्रोफाइल, आई हैव हिज ईमेल आईडी, I have his email ID, I have his mobile number. So guys, this tool I have used it personally, rather I have been using personally for quite a long time. It's a lovely tool, और मुझे इसके बराबर का कोई दूसरा टूल मिला नहीं जो मुझे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल के दे. एंड मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर बहुत ज़रूरत पड़ती है इस तरह के टूल की, जहाँ पे वी नीड दी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर सब्जेक्ट. थैंक यू गाइज, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू how you can create your own corporate email ID, more professional looking than your Gmails and Hotmails. Thank you.